You might have heard of Steve Jobs, the legendary founder of Apple Computers. At one point in time, Apple डूब रहा था, स्टीव जॉब्स को बाहर फेंक दिया गया था कंपनी से, एंड वो डूबते हुए एप्पल को बचाने के लिए स्टीव जॉब्स वापस आए. जब वो वापस आए, the first thing that he did was that he threw out the entire product line of Apple as it was then, and he said that we will focus on 4 computers. That is all. What he wanted to do was increase his leverage. He said कि भाई एक चीज पे फोकस करेंगे, उसको इम्प्रूव करेंगे, एंड फ्रॉम देयर वी विल रीगेन आवर मार्केट एंट्री एंड शेयर. नाउ व्हाई एम आई टॉकिंग अबाउट दिस? क्योंकि यूपीएससी के केस में भी आपके पास लेवरेज होती है. बेसिक चीजें, इफ यू प्रायोरिटाइज योर एफर्ट्स, you can improve your leverage. The second most important thing that you need to do in order to increase your leverage is answer writing practice. जब आप चीज कोई पढ़ते हो और उसका आंसर नहीं लिख के देखते, तो आपको लगता है क्या कि मैंने पढ़ लिया है, मुझे समझ आ गया है, but till the time you have not written answers, you don't really know whether you fully understand it yet. So therefore, practice answer writing, improve your leverage. The third thing is getting mentors. Now, mentors are something that can be very useful for you, but for that you have to put in some amount of the effort beforehand. अगर आप expect कर रहे हो कि भाई मैं mentor एक ले लूँ और वो mentor सारा काम मेरे लिए कर दे और मुझे कुछ ना करना पड़े, तो ऐसा नहीं होगा. But if you're willing to put in the hard work, a mentor can increase the output of that hard work. And if you're interested in joining a mentorship course with us, you can visit courses.upscprep.com to check them out.